मंत्र 9 इग्नोरेंस एंड नॉलेज। मंत्र 9 अंधं तमः प्रविशन्ति जे विद्या उपासते तत भूय इव ते तमो जाउ विद्यायां रता। जो माने अविद्या को उपासना करती से माने भयंकर अंधकार रे पड़ती, पुणी जो माने विद्या को उपासना करती से माने ताठारो भी अधिक अंधकार रे पड़ती। इनटू बाइंडिंग डार्कनेस एंटर दोज हु वर्शिप इग्नोरेंस एंड दोज हु डिलाइट इन नॉलेज एंटर्ड इनटू स्टिल ग्रेटर डार्कनेस एज इट वेयर। एक्सप्लेनेशन। Shankaracharya interprets avidya to mean ceremonial piety and vidya as knowledge of the deities. The verse refers also to the dichotomy of work and wisdom and suggests that while those who are lost in the works without the wisdom of spirit enter into darkness, those who are exclusively devoted to the pursuit of wisdom to the neglect of works enter into still greater darkness. The Upanishad repudiates both schools of thought, that is, those who hold that salvation is attained only by means of work and those who hold that it is to be attained by knowledge alone. Contemplative and active lives should go together. The darkness of intellectual conceit is worse than that of ignorance. Mantra 10, Mantra 10 अन्य देवा हुविर्दया अन्य दाहुर विद्या इति सुश्रुमधीराणां जे नस्तद विचचक्षिरे। केही केही कहउचंती गोटे कथा विद्यारु आसीछि आ केही केही कहउचंती गोटे कथा अविद्यारु आसीछि। ज्ञानी माने हमको एही परि बुझाई अछंती, एथिरे जटिलता जणा जाउछि। डिस्टिंक्ट इंडेड दे से इज द रिजल्ट ऑफ नॉलेज एंड डिस्टिंक्ट दे से इज द रिजल्ट ऑफ इग्नोरेंस। Thus have we heard from those wise who have explained to us these. We cannot grasp the nature of the ultimate reality by either discursive knowledge or a lack of it. The one Brahma is the basis of numberless manifestations. Mantra 11. Mantra 11. विद्यांच अविद्यांच जस्तद वेदो भयं सह अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। जो माने विद्या और अविद्या को एकाठी मिसाई साधना करती बुझंती उपलब्धि करती से माने अविद्या द्वारा मृत्यु पार हुई विद्या द्वारा अमृतत्व लाभ करती। नॉलेज एंड इग्नोरेंस, he who knows the two together crosses death through ignorance and attains life eternal through knowledge. Explanation. Vidya is equated with knowledge of the deities and avidya with karma. Works, though they do not bind by themselves, lead to salvation, are helpful in preparing our hearts for it. If we imagine that we can attain the highest wisdom without such previous preparation, we are mistaken. Avidya is regarded as an essential prerequisite for spiritual life. Man cannot rise to spiritual enlightenment if he has not first, through avidya, become conscious of himself as a separate ego. In spiritual life, we transcend the sense of separateness. To reach the higher self, we must do battle with the lower. Avidya has its place. Without it, there is no individual, no bondage, no liberation. Mantra 9 to 11, relevant slokas from the Bhagavad Gita. Sankhya yoga पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यस्थित सम्य गुवयर्वन्दते फलम्. Chapter 5, verse 4. Jagyarthat karma netra lokayam karma bandhana tadaर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर. Chapter 3, verse 9. And the most famous, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगस्त कर्मणि. Chapter 2, verse 47. कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बन्धन विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त नामयम्. Chapter 2, verse 51. श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्याग त्यागात् शान्ति अनन्तरम्. Bhagavad Gita, chapter 12, verse 12. Mantra 12. The manifest and the unmanifest. Mantra 12. अंधं तमः प्रविशन्ति जे संभूतिमुपासते तत भूय इव ते तमो जाउ संभूत्यां रता. जो माने अव्यक्त व निर्गुण उपासना करती से माने अंधकार गर्भरे पड़ती, जो माने व्यक्त व सगुण उपासना करती से माने ताठारु आहुरि अंधकार रे पड़ती. इनटू बाइंडिंग डार्कनेस एंटर दोज
who worship the unmanifest and into still greater darkness as it were those who delight in the manifest. मंत्र 13 मंत्र 13 अन्य देवाहु संभवा दन्य पाहुर संभवात इति सुश्रुम धीराणां जे निस्तद विचक्षिरे. हे मनुष्य जेपरि विद्वान लोक कार्य कारण रूपी वस्तुर भिन्न भिन्न वक्ष्यमाण उपकार ग्रहण करंती ओ करांती एवं सही कार्य कारण गुण को जानि अन्य मान को जणांती सेही परि तुम्भे माने मध्य कर. डिस्टिंक्ट इंडीड दे से इज व्हाट रिजल्ट्स फ्रॉम द मैनिफेस्ट and distinct they say is what result from the unmanifest. Thus have we heard from those wise who have explained to us these. आमे सगुण ब्रह्मर उपासना द्वारा प्रथमे हृदय पाप और पवित्रता दूर करिया परे अर्थात माया को जोड़िया परे ज्ञान पाई मन हृदय को प्रस्तुत करि परिबा. एहा परे आमे निर्गुण ब्रह्म को जानिबारे समर्थ हेबा. मंत्र 14 मंत्र 14 संभूतिं च विनाशं च जस्तद्देदो भंसः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतमस्तुते. कार्य कारण रूपी वस्तु निरर्थक नुहंती. यही उभय कार्य और कारण स्वरूप को जो विद्वान एक संगे जानती से धर्मादि मुख्य साधन संयुक्त हुई नित्य स्वरूप ज्ञान ज्ञात कारण सहित शरीर त्याग रूपी भय को अतिक्रम करी शरीर इंद्रिय एवं अंतकरण रूपे उत्पन्न कार्य रूपी धर्म रे प्रवृत्ति का आदि सृष्टि सह मोक्ष प्राप्त होती. ही हु अंडरस्टैंड्स द मैनिफेस्ट एंड द अनमैनिफेस्ट बोथ टुगेदर क्रॉसेस death through the one manifest and attains life eternal through the manifest. 12 to 14 explanation. We get our reward according to our beliefs. Asambhuti is the unmanifest and the undifferentiated prakriti. Sambhuti, the manifest, the lord of the phenomenon world. The supreme is neither of these in the sense that he is not also the other. Those who worship the creator Hiranyagarbha obtain supernatural powers. Those who worship the unmanifested principle of Prakriti get absorbed in it. To be absorbed in the world around without turning to the principle at the base of it is one extreme. To be absorbed in the contemplation of the transcendent infinite, indifferent to the events of the manifested world, because they are likely to disturb the inward serenity and self-complacency, is another extreme. Mantra 15 to 18 are the prayer for the vision of God. Mantra 15 हिरण्येन पात्रेण सत्यसापि हितं मुखं तत्त्वं पुसन्न पाब्रूणु सत्यधर्माय दृष्टये. स्वर्ण आवरणकारी सत्यर मुख आवृत हुई रही. हे पालनकर्ता सूर्य से आवरण उन्मुक्त करंतु सत्य साधक मु जेपरि सत्य दर्शन करे. The face of truth is covered with golden disc. Unveil it, O Pusan, so that I who love the truth may see it. Mantra 16 मंत्र 16 पुसन्ने कर्षे जम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मिन समूह तेजः जत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि जो सावस्सो पुरुषः सोहमस्मि. हे पालनकर्ता, हे परमद्रष्टा, हे जगत नियंत्रक चालक, हे प्रजापति सूत आपणकर नेत्ररुद्धकारी प्रखर रश्मि संवरण करंतु जहा धर्म आपणक भितर से आत्मा व ब्रह्म स्वरूप दर्शन करिबी जे हेउची मु. ओ पुसान, द सोल सीयर, ओ कंट्रोलर, ओ सन, offspring of the Prajapati, spread forth your rays and gather up your radiant light that I may behold you of loveliest form. Whosoever is that person yonder, that also am I. मंत्र 17 मंत्र 17 वायुर नीलममृत मथेदं भस्पान्तं शरीरं ओ क्रतोस्मर कृतं स्मर क्रतोस्मर कृतं स्मर. मोर प्राणवायु वायु तत्व मोर प्राणवायु वायु तत्व मिसी जाऊ मोर शरीर पूरी भस्म हेउ. हे मन, तुम्हें कौन करिथिल स्मरण कर, तुम्हें कौन करिथिल स्मरण कर. मे दिस लाइफ एंटर इनटू द इमोर्टल ब्रेथ, देन मे दिस बॉडी एंड इन ashes. O intelligence, remember what has been done. Remember, O intelligence, what has been done. मंत्र 18 मंत्र 18 अग्ने नया सुकथा राये अस्मान विश्वानि देव वायुनानि विद्वान जूयद्धस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठाते नम भक्तिं विधेम. हे अग्नि, हे ईश्वर, आपण सत्पथ कौन जानती, आमको सत्य प्राप्ति रूपक अमूल्य धन प्राप्ति करांतु, संसार आकर्षण उद्धार करंतु. मु आपणको मोर सर्वोत्तम नमस्कार निवेदन करुछि. ओ अग्नि,
Lead us along the auspicious path to prosperity, O God, who knowest all our deeds. Take away from us deceitful sins. We shall offer many prayers unto thee. Significance of mantra 15 to 18. Verses 15 to 18 are uttered at the time of death. Even today, they are used in funeral rites. We are required to remember our past deeds as their results accompany the departing soul and determine the nature of our future life. श्लोक 15 ରୁ 18 ଜଣେ ସାଧକର ସାଧନାର ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାର ଶ୍ଲୋକ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ପରେ ଶରୀର ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ତଥା ମନ ସଂସ୍କାର କର୍ମଫଳ सुख दुख भोग इत्यादि मृत्यु हेब आविर्भाव हेब ब्रह्म तत्व। कंक्लूडिंग रिमार्क्स ईशोपनिषद्स। The Upanishad emphasizes the unity of God and the world and the union of the two lives, the contemplative and the active. We must cleanse our souls to ascend the heights of contemplation. The seers of the Upanishads have set an example not to neglect the work of the world through the love of contemplation. They are noted for their stability and poise. Their calm was a vigilant one. They act without selfishness and help without patronizing. These are the references. The English interpretation is from the Principal Upanishads by Professor S. Radhakrishnan. The Odia interpretation and the slokas are from Upanishad Sabdartha Vistruta Rachana by Professor Chittaranjan Das. So this concludes Isa Upanishads. Thank you for listening.